I got a very strong reaction from China. I would like to share it with you and all the audience and take your views because it is a pretty important thing and it's very interesting, right? So ये था कि I'll give you the background. 3 दिन पहले हमने ये स्ट्रेटेजिक अपना कासा डायलॉग्स किया था, जिसमें हमने चाइना, रशिया और वेस्ट के बारे में बात किया था, और हमने ये भी बात किया था वेयर डज इंडिया स्टैंड। और इसके जो वेबिनार के पैनलिस्ट, जैसे आपको पता है, हमारे कासा मेंबर्स हैं ब्रिगेडियर अरुण सहगल, एम्बेसडर गुरजीत सिंह और ब्रिगेडियर अरुण रोमेल दहिया, और मैंने इसका मॉडरेट किया था। बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमारे संबंध रूस के साथ क्या होगा, हमारा संबंध यूएसए के साथ क्या होगा, चाइना के साथ क्या होगा, वगैरह वगैरह। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन मिला चाइना से। चाइना के ये बोलता है, what does he say? I'll read it out and I would like you to comment at the end of this. Just concentrate on what he says. Interesting insight into the mindset of one set of India's elite. Unfortunately, all the speakers seem to be totally caught up in the East India Company view of the world and seem to have great difficulty breaking out of that mold. They seem unaware or unwilling to see that the current model of global governance and international relationship, aka globalization, rules based order, US hegemony, liberal world order, is simply the East India Company model with minor cosmetic variations. So इसमें क्या है, चाइना बोलता है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइपिंग आप झेल रहे हो। Indians don't get this. They still think that India will rise and one day be even more powerful than the West and will presumably be able to behave like they have done. Hence, the statements like China can never be a friend. There is no reason why China should be the enemy of India except that the British considered them to be so, and India has continued with this legacy. ठीक, तो ये बोलते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में दुश्मनी किस लिए है, वी शुड बी फ्रेंड्स, ओके। और ये एक ब्रिटिश लेगेसी है। और भी बोलता है, थोड़ा लंबा है, बट आई वुड लाइक टू पुट इट आउट टू एवरीवन। It is remarkable that Indians were not too fussed about losing what is now Bangladesh and Pakistan, but are fighting tooth and nail over a few thousand square kilometers of desert. सीधा ये अक्साई चिन के ऊपर इन्होंने उंगली उठाया है कि भाई आप इसके लिए क्यों कष्ट हो रहे हो, आपने बांग्लादेश छोड़ दिया और पाकिस्तान भी छोड़ दिया। You have got it totally wrong on the Russia-China relationship. The US has said openly that their system, ideology, philosophy cannot tolerate any peer. Hence, China has to be destroyed and cut down to size. Similar with Russia. That is the root of their alliance, their wish to dismantle the current East India Company model of global governance and replace it with something fairer. ये रशिया और चाइना के गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं. They want to destroy the East India Company, which includes India. If the US succeed in destroying Russia and China, do you think India will be safe? I suggest to read Rajiv Malhotra to find out exactly what the West thinks of India and wants to do with it. Hey, Rajiv Malhotra, I don't know who he is, but so leave it at that. Right? He must be someone who's speaking against India or against USA. China not comfortable with India's rise. हमने बोला भाई उस वक्त in the webinar we said India is not, I mean China is not comfortable with India's rise. तो उसका सवाल उठा रहा है. What is the evidence for this? Presumably the US is comfortable with India's rise. Hence the attempts at color revolutions, fanning dissent वगैरह. Again, please refer to Rajiv Malhotra. उसके हिसाब से USA is fanning a color, could fan a color revolution in India and destabilize India. And यही भी बोलता है कि Russians annoyed with India. Are you surprised? There is a Russia trying to destroy the East India Company system that is strangling India, and India is still hemming and hawing. Remember, India's share of the global economy in 1947 was around 5%. ये गलत है. उस वक्त हमारा ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर सिर्फ 1.2% था. 1%. In 2023, it is still around 5%. In 20 years, India's economy may have doubled, but if in the meantime the global economy has doubled, will India have advanced? ये भी गलत है, क्योंकि आज के दिन हमारा economy सबसे ज़्यादा चल रहा है as per global average. So if that happens, we will be far ahead
the thing. East India Company model has successfully kept India down, and if current indications are any guide, it will continue to do so. You do well to keep an eye on that figure, India's share of the global economy. At 20% of the global population, India need not behave like the US to make its mark in the world. Just being a normal country will be enough. What's his definition of a normal country? आगे बताता है. The sooner India gets over this East India Company mentality and being overawed by Gora Sahibs and join the rest of the world. So he wants us to join the rest of the world. The rest of the world is China and Russia against the West. In bringing down the current global system, we will all be better off. Okay. So one thing the panel is right. The world cannot ignore India. So he's also agreeing China cannot ignore India and maybe cannot do also without it. So it is time to decide clearly and unequivocally which side India wants to be on. So it's a long one, Satish, but I want your views on it. Why मैं ये क्यों ये इतना लंबा चौड़ा बता रहा हूँ? क्योंकि आई कीप फोकसिंग ऑन चाइना इन माय चैनल, आज जैसे आपको पता है कर्नर शॉट के ऊपर, और मैं सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम सही बोल रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन आ रहा है। इसका मतलब देखिए, चाइना वाले भी देख रहे हैं, हमारे खुद के लोग नहीं देखते हैं, चाइना वाले हमें मॉनिटर कर रहे हैं, राइट? So this is what I wanted to put out. So if on a different note, you want to know something which actually China is bothered about, watch Gunner Shot. But having said that, what are your views on this, Satish? So firstly, it's nice, interesting that आपको ये comment आया चाइना से, तो उसके अपने बायस तो क्लियर दिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, he seems to be obsessed with something called the East India Company model. He doesn't explain that East India Company model क्या है. He also seems to be very obsessed with the fact कि India has to decide, जो लास्ट में कहा उसने, India has to decide which side it is on. तो क्लियरली वो चाहते हैं कि इंडिया रशिया चाइना वाली तरफ आ जाए, वेस्ट के खिलाफ हो जाए. वेस्ट यही चाहता है कि इंडिया वेस्ट के साथ रहे. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, किसी ने कहा हो या ना कहा हो, वेस्ट की ये प्रयत्न रहा है पिछले 10 सालों में, खासतौर पे पिछले 10 सालों में, एक दशक में, कि इंडिया वेस्ट से अलाइन रहे, रशिया से हट जाए. इसीलिए सडनली हमारे मतलब पिछले 15 सालों में देखा जाए तो हमारे जो सैंक्शंस थे आफ्टर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ बिकमिंग अ न्यूक्लियर कंट्री, वो धीरे धीरे सब यूएस ने हमारी न्यूक्लियर डील जो है आपस में सॉर्ट आउट किया. क्यों किया? अब हमारे को इंजन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हमारे को फाइटर्स दे रहे हैं. मतलब दे वांट कि हम रशिया से ना लें. इफ यू रिमेंबर S-400 जब हमने रशिया से लिए थे तो अमेरिका ने काटसा का भी हमें एक धमकी दिया था. लेकिन जब हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई और हमने S-400, वी वेंट अहेड एंड गॉट S-400, तब बाद में उन्होंने बैक ट्रैक किया, नहीं वी अंडरस्टैंड योर कंस्ट्रेंट्स. जबकि उसी S-400 के लिए उन्होंने टर्की को सैंक्शन किया है, टर्की ने भी S-400 लिया. तो मेरा कहने का मतलब है, अब यूएस भी, लेड बाय यूएस, द वेस्ट इज, वो भी चाहते हैं कि हम उस कैंप में आए. तो जैसे इस कमेंटेटर ने कहा है कि वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर इंडिया, इतना तो तय है. हम परसेंटेज में ये 5% बोल रहा है, हम 1% थे, आज हम डबल, हमारी फास्टेस्ट ग्रोथ है. वो छोड़ो, एम्पेरिकल डाटा में वो गलत हो सकता है. सेंस ही इज राइट इन दैट सेंस कि वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर इंडिया, एंड इट इज अ वेरी, हिज कमेंट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन. मतलब वो तो हमारे को वो कर रहा है, कह रहा है कि आप हमारे कैंप में आओ, उधर जाओ हमारे साथ, हाँ हमारे कैंप में आओ. तो बेसिकली इट इज दैट. सेकेंडली, पर मैं एक बात से मैं सहमत हूं, उसकी एक बात से, और जब वो कहता है, बड़ा पिथी सेंटेंस है, दैट मतलब व्हाई इज चाइना एन एनिमी ऑफ इंडिया. करेक्ट. मैं कई बार कह चुका हूं और अलग विषयों में, डिस्कशन में, और मैं आज लेट मी स्टेट दैट इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम क्या है. इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ बॉर्डर की प्रॉब्लम है. मतलब इट इज नॉट ए डीप रूटेड प्रॉब्लम, इट्स ए बॉर्डर इशू. इट्स नॉट ए डीप रूटेड प्रॉब्लम जैसे इंडिया और पाकिस्तान की है. पाकिस्तान हैज एन आइडेंटिटी क्राइसिस एंड दैट्स व्हाई इट इज
it is doing this always. It is trying to compete with India. तो मतलब वो एक इशू है. वो वो अलग बात है. कश्मीर, वो अलग बात है. हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम, जैसा कि आपको सबको याद होगा कि 90s में एक ऐसा टाइम आया था जब ऑलमोस्ट ये तय हो गया था कि हम बॉर्डर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे. अक्साई चिन और तवांग, सॉरी, अरुणाचल के बीच का ट्रेड ऑफ हो जाएगा और हम रिजॉल्व कर दिया जाएगा प्रॉब्लम. ऐसा एक समय आया था. बहुत बैक चैनल्स एंड फ्रंट चैनल्स सब वर्क किए थे उसके ऊपर. तो चलो हम उसकी बात ना करते हुए ये कहें कि मान लीजिए आने वाले समय में जबकि बॉर्डर्स की रेलेवेंस बहुत कम रह जाती है, क्योंकि एक तरफ हम ईस्ट लद्दाख में जो लड़ाई हो रही है 30 साल से, लड़ाई नहीं, फेस ऑफ हो रहा है 3 साल से, उस 3 साल के फेस ऑफ में हमारा ट्रेड हैज इंक्रीज बाय $30 बिलियन और $30 और $40 बिलियन से इंक्रीज हुआ है. तो बॉर्डर्स की रेलेवेंस कम होती जा रही है. जब धीरे धीरे जब हमारा बॉर्डर का ही प्रॉब्लम है और बॉर्डर्स की रेलेवेंस कम होती जा रही है, आने वाले समय में वो पहले वाली या कोई और सोल्यूशन अगर हो जाए और इंडिया और चाइना फाइंड अ मोडस विवेंडी, कोई एक तरीका निकाल लें बॉर्डर्स को सॉल्व करने का, तो जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन जाएं, पर जरूरी ये भी नहीं है, यहां मैं कह रहा हूं, मैं सहमत हूं, जरूरी ये भी नहीं है कि हम इतने बड़े एडवर्सरीज हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान होता है हमेशा. तो मेरा कहने का मतलब पाकिस्तान का, व्हाट आई एग्री विद यू इज इंडिया पाकिस्तान का इंटेंसिटी नहीं होगा, वो नहीं है. तो अगर मान लीजिए, ऑल आई एम सेइंग, just one last sentence, listen, all I'm saying is that US is also, the West is also not happy with arrangements like BRICS. क्योंकि ब्रिक्स में अगर हम लोग चले गए, दैट इज वाई G20 को बड़ा सक्सेस बनाया वेस्ट ने, क्योंकि हमारे को उस खेमे में ले जा रहे हैं. अगर हम ब्रिक्स बहुत स्ट्रांग हो गया, यूरोप इज is an empty bag today. अमेरिका के पास रह क्या जाएगा? मतलब so they need us. the point जो आपने बोला है कि neither is today as we rise, this is a truism which will come. जैसे जैसे हम rise करते जाएंगे, the West also will not be comfortable with us. Yes. Right. जो एक important बात बताया है, I want to reinforce, through centuries, इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे ही रहे हैं. अच्छे रहे. यही है कि उनके यहाँ ट्रैवलर आते थे, हमारे यहाँ से ट्रैवलर जाते थे, हमने वहां बुद्धिज्म भेजा है वगैरह वगैरह वगैरह. वी हैव ऑलवेज हैड गुड रिलेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम 1962 जब उन्होंने हमें अटैक किया है और ये बॉर्डर का प्रॉब्लम हो गया है. राइट. जैसे आपने बोला, अगर ये बॉर्डर का प्रॉब्लम कुछ हल निकल आए, दो वी माइट फाइंड अ मोडस विवेंडी टू कोएग्जिस्ट टुगेदर, is also a optimistic hope, which I hope will happen. But there is also a problem in this, in the sense there is no history in the world affairs of the world jahan do nations with a 3,000 kilometer disputed border have grown together at the fastest rates in the human history. Yes. Which is happening with India. And that too, both are fighting for the same pocket in Asia, regional hegemony of Asia. And both are nuclear powers. Both are nuclear powers. Neighbors' nuclear powers both come. Nuclear powers. So there are problems which we will have with China. और चाइना के बारे में हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर आप सब जो भी यहाँ देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगा कि ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया कि चाइना के बारे में हमारा जानकारी ज्यादा हो. और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये मैं पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने मोड़ लिया चाइना की ओर और किसी के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ चाइना के बारे में, विच इज द मेन एनिमी ऑफ इंडिया एज ऑफ टुडे. राइट. और मैं इसमें कुछ दर्शकों का रिएक्शंस भी आपको दिखाना चाहता हूँ, just to reinforce the case why you should watch Gunners channel. और ये किसी ने लिखा है, ये जो वेबिनार पढ़ने के बाद, I would add to date that General Shankar remains the only general to have a YTube channel. I don't find any NATO officers
with one. So this is a pioneering effect, and this pioneering effort has been started by a set of army officers, including General Satish Dua, because we wanted to democratize strategy and get it down to people like you who are watching. So that I need more people to watch so that all of you understand what the international scene is. He says no other strategic, knowledgeable, China-centric YouTube channel present like yours. A very good initiative of increasing awareness about China and the general mindset of Indians, which I want to do. That won't happen if you people don't watch in numbers, or give it to your friends or tell your friends to watch this. And then someone has said, since I started watching your channel, I have lost interest in all other so called experts. The quality and depth of analysis by you are unmatched. Thank you for taking time and effort in sharing your knowledge and wisdom. This is actually thanks to everyone who comes on this channel, because everyone who comes on this channel is definitely more knowledgeable than me in his area of expertise. For example, General Dua here has commanded 15 Corps. He's been CIDSS and he's been CISC. He's, so many things. The wealth of knowledge he brings to this channel is tremendous. And so does everyone. Because I That bring that everyone on this channel. allow me one interruption. That is your humility. No, no, it's not a We matter of humility. I good. take the trouble of getting the best people on this channel so that every Indian is better educated. ये पहले हम कोई सोचता आप सोच नहीं सकते हो कि ये दो जनरल आके आपके साथ ऐसे बात कर रहे हो. So I want more people to join in and